Hello my viewers, I am your host Gurinder Singh and today I am going to share with you the second session of our reading. The students who are new, I request them that please do subscribe my channel and do not forget to press the bell icon because with that only you will get notification. I have made a session before that it was a first session of reading, and in that I have told that what should be the approach. It is very important for you all who have not seen that. Please, here is the link. You can click over here and see that video first. So in this lesson, I will teach you that how we can solve headings, true, false, and fill in the blanks. Yes, all three things will be covered at once. Okay, we will try to solve one full passage in minimum time. बहुत कम time लेंगे और एक पूरा passage हम solve करेंगे 13 questions. This video is for all academic as well as general students. Okay, academic, basically it is for academic, but generals can also watch it because at your last session sometimes you get questions according to this pattern only. Okay, so let's start, and I request you that please do not forget to comment and end तक देखिएगा वीडियो, फिर ही आपको समझ लगेगी. And I can guarantee that it will definitely solve your problem. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. And do not forget to comment. Okay, so let's start. So guys, now here we start our reading. It is a Cambridge reading and first section is about headings. There are 3 questions and in this type we have to first read the headings. सबसे पहले हम headings read करेंगे, list of headings read करेंगे कि क्या दी हुई है. For example, यहाँ पे है the expansion of international tourism in recent years. Expansion of international tourism. Expansion है international tourism का recent years में. How local communities can balance their own needs with demands of wilderness. How local communities. Okay, हमने ये read कर लिए सारे. Fragile regions and the reasons for the expansion of tourism. Fragile regions and reasons for expansion. Traditional methods of supply in fragile regions. Traditional methods of supply. Some of the disruptive effects of wilderness tourism. The economic benefits of mass tourism. Now here we read them all. ये read करने के direct बाद हमें jump नहीं करना है on the passage. After that, after reading this list, we have to read next section of question. Now here it is. There are yes, no, and not given. I hope the video is clear to you. The words are clear. Fourth question है the low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive to many countries. Next, fifth question is deserts, mountains and Arctic regions are examples of environments that are both ecologically and culturally fragile. So we have read these 2 questions. Our headings we have read, and now the last question is about one word, fill in the blanks. Now here it is, Swiss pace. Okay, now we don't have to read this word exactly. It will take time, so we can't skip that. You know that what is the word, just skip it. आप skip कर सकते हैं, आपको पता है कि आपने सिर्फ ये find करना है keyword, ठीक है. Swiss pace. और क्या keywords हैं? Low financial cost of setting wilderness, low cost, desert, mountains, ecological and culturally fragile. So headings हमने read कर ली हैं. Now let's jump to the passage. Now here let's start from the beginning. From beginning we have to start. The heading is the impact of wilderness tourism. This we must have read first. Okay. Start करने से पहले हमने read करना है. हमने analyze करना है कि कौन सा passage करना है. Then after that. Now first passage, first paragraph जब हम read करते हैं. The market of tourism in remote areas is booming as never before. Is booming. Countries all across the world are actively promoting their wilderness. Countries wilderness को promote कर रहे हैं, such as mountains, Arctic deserts, small wilderness to high spending tourists. The attraction of these is obvious.
अट्रैक्शंस जो हमने पहले रीड किया है हमने, ट्रू फॉल्स में भी क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंट्रीज अट्रैक्ट हो रही हैं वाइल्डनेस की तरफ. The attraction of these areas is obvious. By definition, wilderness tourism requires little or no investment. Little or no investment. यहाँ पे इन्होंने कहा है little or no investment. Little investment चाहिए. यहाँ पे true false का क्वेश्चन था. The low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive. Low financial cost सेम चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन में, पैराग्राफ में, कि लो फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से अट्रैक्ट हो रही है. सो आंसर इज यस, राइट. नेक्स्ट इज desert mountains arctic ecologically and culturally fragile. These areas are examples that environments that are both ecologically and culturally fragile. Now here, but does not mean that there is no cost. No cost. At 1992, Environment and Development recognized these regions are fragile. These regions, like United Kingdom Conference Environment, that is highly vulnerable to abnormal pressures, not just in terms of their ecology, but also in terms of culture. Culture और economy के उसमें वे fragile हैं of their inhabitants. The three of most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of proportion of Earth's surface they cover, are desert, mountains, and Arctic areas. ये क्या है? What are they? They are examples. इन्होंने यहाँ पे लिखा है the three most significant types of fragile environment. Three most significant type of fragile environment in these respect are these: ecology and cultural. So now turn up to the question. Here also it is written the same thing. Desert, mountains, Arctic regions are examples of environment ecologically and cultural. So answer will be yes. Now we have done two. Now we have to read next two questions again. Wilderness tourism operates throughout the year in fragile areas. Wilderness tourism है जो पूरे साल काम करता है areas में, fragile areas में. The spread of tourism in certain hill regions has resulted in fall of amount food produced locally. जो spread है tourism का in certain hill regions has resulted, इसके साथ क्या हुआ? fall हो गया किसी amount of food locally में. ठीक है, तो two questions we have read again. Now the last was fill in the blank Swiss space. We have not got location till yet, but after reading the first passage we are getting a lot of answers from first paragraph only. An important character is their market seasonality. Market seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. Quite clearly parts of the year. कुछ year defined parts, एक साल के कुछ part में ही ये चलता है. So now I think we got our answer. पैसेज में उन्होंने कहा कि वाइल्ड टूरिज्म और इंक्लूडिंग अदर थिंग्स आर ऑपरेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द ईयर. सो इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग वाइल्डनेस टूरिज्म ऑपरेट्स थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल काम करता है, लेकिन हमें उन्होंने पैसेज में कहा कि कुछ टाइम पे काम करता है साल के. सो आंसर विल बी नो. Yes, I think that you are getting my point, that how we have to cover all these. Traditional food gathering in desert societies was disrupted evenly over the year. Traditional food gathering थी जो traditionally food gather करते थे, इकट्ठा करते थे in desert societies was distributed evenly over the year. सारा साल वो इकट्ठा करते रहते थे. इसके अलावा जो 7th क्वेश्चन है वो है द स्प्रेड ऑफ टूरिज्म. ऑल दीज क्वेश्चंस मस्ट बी इन योर माइंड. मस्ट क्या, जब आप रीड करते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स मार्क करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाते हैं, और जब आप पैसेज को रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कि ये वर्ड मैंने रीड किया हुआ है, एंड एट दैट टाइम यू विल गेट योर लोकेशन. लोकेशन मुझे पता है कि आप सब लोगों को मिल जाती है, बट हेयर कम्स द पॉइंट.
आप लोगों ने कीवर्ड्स मैच नहीं करने, ठीक है। कीवर्ड्स अगर मैच करोगे तो आंसर्स गलत ही मिलेंगे। यू हैव टू मैच कीवर्ड जस्ट टू फाइंड लोकेशन। कीवर्ड लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, उसके बाद आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं बाय मैचिंग देयर मीनिंग्स। आंसर्स उसके मिलेंगे आपको मैच करके उनके मीनिंग्स। ओके, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्प्रेड ऑफ टूरिज्म। फॉल भी उनके जो फूड है उसकी अमाउंट फॉल हो गई थी टूरिज्म की वजह से। नाउ अभी तक हमने एक पैराग्राफ ही रीड किया और हमें सारे के सारे लगभग ट्रू फॉल्स मिल चुके हैं। Tourists are drawn to these regions by their natural landscapes, beauty, and in unique cultures of their indigenous people, and poor government in these isolated areas have welcomed to the new breeds adventure grateful and hard currency they being. For several years now, tourism has been the prime source of foreign exchange in Nepal, Bhutan. Tourism is also a key element in the economic zone of Nepal and desert areas such as. Now we have not got anything, but now we have to think, we have to keep in mind while reading only that what this paragraph has told us. Okay. इस पैराग्राफ ने हमें क्या कुछ बताया? इस पैराग्राफ ने हमें बताया है कि जो टूरिज्म है वो क्यों बूम कर रहा है। क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसलिए वो नेचुरल ब्यूटी की वजह से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। सो दे हैव गिवन द रीजंस ऑल ओवर द paragraph. They have given the reasons that why tourism is increasing. So now let's check the headings as well now. Isn't it quite exciting that we are getting all the answers? The expansion of international tourism in recent years. Recent years, they have not talked about recent years. How local communities can balance their own. Balance की बात नहीं की गई है. Fragile regions and the reasons for their expansion of tourism. Yes. एक्सपेंशन की बात की गई है, रीजंस भी दिए गए हैं, रीजंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म देयर। अगर आपको नहीं पता लगा ये भी, देन अगेन यू कैन चेक नेक्स्ट। ट्रेडिशनल मेथड्स की बात नहीं की गई है, सो वी हैव टू क्रॉस दैट। सम ऑफ द डिसरप्टिव इफेक्ट्स की बात नहीं की गई है। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मास टूरिज्म, बेनिफिट्स नहीं बताया अभी तक हमें। गॉट इट? So here the A section का answer is third. Now guys, we have to read section B. Okay, we have not got our answer of food की amount की जो food की amount है वो reduce हो रही है. We have not got that answer yet. Once a location is established as a main tourist destination, आपको भी ऐसे ही रीड करना है। आपको ऐसे नहीं रीड करना। Once a location is established as a main tourist destination, ठीक है, ऐसे अगर रीड करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स ही स्लो है। Okay, you have to read like once a location is established as a main tourist, the effects of the local community are profound. अगर आपको profound का मीनिंग नहीं पता, that doesn't matter at all यार, ठीक है। इसमें इस लोकेशन नहीं है तो ये मैटर नहीं करता। When hill farmers, for example, can make more money in a few weeks working as potters in a year working in their fields, it is not surprising that many of them give up their farm work, which is give up their farm. Farm की बात हो गई, अब मैंने farm वाला रीड किया था, कीवर्ड मार्क किया था वहाँ पे farm. That many of them give up their farm work, which is thus left to other members of the family in some hill regions. This has led to a serious decline in farm output. Farm output की क्या हो गया? Serious decline हो गया. So we have got our answer or not? Yes, we have got. Now let's check what was. Now here the question was, the spread of tourism in hill regions has resulted in fall in amount of food. So answer is yes. Next question is traditional food gathering desert societies was distributed evenly over the year. कि जो food gathering है वो पूरे साल में divide किया गया. And after that the question is government handouts do more damage. Government के जो handouts हैं वो ज़्यादा damage कर रहे हैं
to the tourism than tourism does to traditional patterns of gathering, food gathering. Now let's check. यहाँ पे हम जब रीड कर रहे हैं हमें साथ साथ हेडिंग्स भी फाइंड आउट करनी है, ये याद रखना है. हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक चीज़ मिली है जो नेगेटिव पॉइंट है, जिससे क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है फार्म आउटपुट. ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट. The result has been that many people in these regions have turned outside supplies to rice and other foods. In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally dependent on hunting. Hunting पे depend करती हैं animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. Relatively short season. Have you got your answer? वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि गैदर करते हैं पूरे साल में, यहाँ पे क्या है, relatively over a short season. So have you got? Yes. Now the answer is yes. No. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ज़्यादा खराब कर रहे हैं और चीज़ों से. ठीक है. नेक्स्ट we have to read a line. However, as some inhabitants become involved in tourism, they no longer have time to collect wild foods. उनके पास टाइम नहीं है wild food collect करने का. This has led to increased dependence on bought food and stores. Tourism is not always the culprit. Tourism जो है वो कह रहे हैं कि tourism हमेशा culprit नहीं रहा. Behind such changes, all kinds of wage लेबर और गवर्नमेंट हैंडआउट्स कीवर्ड आ गया. अगर आप कीवर्ड्स मैच करके लगाओगे तो आप यस ऐसे नहीं लगा सकते. हमें यहाँ पे क्या करना है, मीनिंग मैच करना है. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टूरिज्म ही अकेला कल्प्रिट नहीं है. ऑल काइंड्स ऑफ वेजेस, लेबर और गवर्नमेंट हैंडआउट्स टेंड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल सर्वाइवल सिस्टम्स. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो है टूरिज्म कल्प्रिट नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्प्रिट हैं. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गवर्नमेंट हैंडआउट्स डू मोर डैमेज, कि गवर्नमेंट्स के जो हैंडआउट है वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं. इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कि गवर्नमेंट के हैंडआउट्स जो हैं ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं? सो आंसर विल बी यस, आंसर विल बी नॉट गिवन. ठीक है, नॉट गिवन है आंसर, क्योंकि यहां पे इन्होंने कहा गवर्नमेंट हैंडआउट्स डू मोर डैमेज देन टूरिज्म. वहां पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है कि कौन सी चीज ज्यादा डैमेज कर रही है, कौन सी चीज कम डैमेज कर रही है. हेयर आई वांट टू टेल यू वन टेक्निक आल्सो एज वेल. जहां पे भी यस नो और ट्रू फॉल्स में देन या कोई भी कंपैरेटिव वर्ड होता है वो 70% नॉट गिवन ही होते हैं आंसर्स. ओके, सो अगर आप तुक्के लगा रहे हैं एंड ऑन द लास्ट यू कैन डू लाइक दिस. ओके, इट्स योर विश. आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो. आई एम सेइंग दिस इज 70%. इट कैन बी येस और नो एज वेल. आप खुद ट्राई कीजिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. ओके, अगर आपको ये ट्रू लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. एटलीस्ट 3 और 4 रीडिंग्स में ये टेक्निक अप्लाई करके देखिएगा. देन वाली या जो भी कंपैरेटिव वर्ड होता है वो नॉट गिवन होता है. ओके, ट्राई करिएगा. फिर देन इफ यू थिंक इट इज गुड देन यू कैन अप्लाई. नाउ वी हैव रेड सेक्शन बी ऑल्सो. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द हेडिंग. सेक्शन बी में हमें क्या देखा गया, इम्पैक्ट्स ही बताए गए हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया कि फार्म आउट की आउटपुट है जो वो कम हो गई. दूसरा उन्होंने बताया कि शॉर्ट सीजन वो देख रहे हैं. सेकेंडली उन्होंने बताया कि कल्प्रिट सिर्फ टूरिज्म नहीं है, गवर्नमेंट हैंडआउट्स, वेज, लेबर और भी बहुत चीज़ें हैं. नाउ वी हैव टू मैच द हेडिंग. सेक्शन बी की हेडिंग क्या हो सकती है? द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म. नहीं, एक्सपेंशन की तो बात ही नहीं की गई है. हाउ लोकल, ये हो गया अपना नहीं, ये हो गया. हाउ लोकल कम्युनिटीज कैन बैलेंस, लोकल कम्युनिटीज कैसे बैलेंस कर सकते हैं. वॉज इट देयर कि लोकल कम्युनिटीज को कोई राय दी गई है कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं? नो. ओके, ये चीज़ हो गई हमने.
थर्ड फोर्थ इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड सप्लाई इन फ्रेजाइल रीजन्स। ट्रेडिशनल मेथड्स की बात, फूड सप्लाई की बात तो की गई है, लेकिन उनके ट्रेडिशनल मेथड्स की पूरे पैराग्राफ में बात नहीं की गई है, ठीक है। सो इट इज कट डाउन। फिफ्थ इज सम ऑफ डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ वाइल्डरनेस टूरिज्म। कुछ बहुत खराब वाइल्डरनेस टूरिज्म के इफेक्ट्स, हाँ ये बताए गए हैं, इफेक्ट्स बताए गए हैं वाइल्डरनेस टूरिज्म के कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है। सो आंसर इज 5. Got it? How we have to choose our headings? By this method आप headings बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा इस मेथड से। ओके, सो नाउ अब लास्ट सेक्शन हमारा बचा है जिसमें लिखा था स्विज। वी हैव टू फाइंड नाउ कीवर्ड स्विज, स्विज स्विज एंड सी सेक्शन, और उसके साथ साथ हमें सी सेक्शन की हेडिंग भी चाहिए। देखिए सी सेक्शन कितना बड़ा है, अगर आप सिर्फ हेडिंग करेंगे तो एक बार में ये सिर्फ आप पूरा पैसेज रीड करेंगे, पूरा पैराग्राफ, ठीक है, फिर दोबारा रीड करेंगे क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। नाउ व्हाट वी विल डू, हम फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करते करते हम इसकी हेडिंग भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एट वंस ओनली, विच विल सेव योर टाइम। नाउ हियर लेट्स स्टार्ट। कोई भी पैराग्राफ डायरेक्ट कीवर्ड से हमें स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि हमें पता भी है कीवर्ड यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे क्योंकि हमें हेडिंग भी फाइंड आउट करनी है। Stories about the problem of tourism have become legend in the last few years. अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, that's okay, that doesn't change anything. Okay, इस पे ज़्यादा टाइम हमने डिवोट नहीं करना है। Do not stop over here कि हमें मीनिंग नहीं पता सर, हमें पहले मीनिंग बताओ, अब मोबाइल फ़ोन पे देखने लग जाओगे, ये कीवर्ड नहीं है। Yet it does not have to be a problem. Although tourism inevitably affects the region in which it takes place, cost to these fragile elements to these fragile environments and their local cultures can be minimized. Indeed, it can be a vehicle for and a growing number of adventure tourism operates trying to in the Swiss Alps communities have decided. Okay, Swiss Alps आ गया। अब हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का अगर फिल इन द ब्लैंक आता है, सबसे पहले हमें उसके पहले के बारे में वर्ड्स देखने हैं कि क्या होते हैं। लाइक स्विस पेज रिवाइव्ड प्रोडक्शन ऑफ रिवाइव्ड प्रोडक्शन ऑफ, किसी चीज़ की प्रोडक्शन को रिवाइव कर रहे हैं, किस चीज़ की वो देखते हैं। स्विस पेज, ओके, future depends on individual tourism more effectively with the local economy, local concern about the rising number of second home developments and the Swiss pace resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a cheese production. किस चीज़ की प्रोडक्शन है? चीज़ की प्रोडक्शन है। So we got our answer. Easy? Is it easy? Yes. Now next is Arctic communities. Arctic communities क्या कर रही हैं? Operate dash business. कौन सा business operate कर रही हैं? Arctic companies. Now we have to find Arctic communities are now operating a tour business. We got our keyword tour business. Tour business को operate कर रही हैं. Now do not think that it is easy, okay? If you think that this is easy, you can PDF me your file, your passage. I will definitely solve that also. Okay? यहाँ पे आएगा tour. यहाँ पे क्या था? Production of cheese. Now कौन से Acoma and San? कौन सी production produce and sell? क्या चीज़ें produce और sell कर रहे हैं? Acoma and San. Acoma. Now we have to find Acoma and San. Arctic tourism, ये हमने क्लियर। Alaska, native people in the here. The Acoma and San
have established highly profitable pottery business. Pottery business उन्होंने profitably establish किया है, ठीक है. So yeah, our answer is pottery. Pottery. Next is Navajo and Hopi produce and sell. Not forget that we have to find heading as well. Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewelry. The answer is jewelry. Now the question is, what is the heading of this paragraph? So क्या हो सकती है हेडिंग? वी हैव फाउंड द डिफरेंट थिंग्स. जो चीज़ें उन्होंने कही हैं कि ये चीज़ें कर रहे हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए या कल्चर को एक्सपैंड करने के लिए. नाउ लेट्स सी द लिस्ट. हियर वी हैव टू मैच द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म. नो. हाउ लोकल कम्युनिटीज कैन बैलेंस देयर ओन नीड्स. लोकल कम्युनिटीज की हदायत दी गई हैं या कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं देयर नीड्स. हो सकता है, इट कैन बी, ठीक है. कोई और बनता है. फ्रेजाइल रीजन्स एंड एक्सपेंशन, ये तो हो गया. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड सप्लाई के ट्रेडिशनल मेथड्स तो नहीं बताए गए हैं. सम पीपल डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स तो नहीं बताए गए, तो पॉजिटिव बताए गए हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सो गाइस, ये हमें लगता है कि ये है आंसर. हाउ लोकल कम्युनिटीज कैन बैलेंस देयर ओन नीड्स. यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने? ऑल्दो inevitable affects the region in which it takes place, the cost of these fragile environments and their local cultures can be minimized. So answer is second. Got it? Was it easy? Was it exciting? If yes, please do not forget to comment. By this method, we completed all the 3 sections by reading this passage just once. So guys, how was it? Wasn't it exciting? You can solve now all the problems at once, and it will take a minimum time, and you can solve problems easily. Okay, so this was one of the way in which you can solve your readings, and I can definitely say that your problems will be solved and reading will not be a huge problem after watching this video. But if some of the students have any doubt that this reading was easy, you can send me PDFs on my WhatsApp number, which will pop up over here, and in my next video I will definitely solve that. Okay, so please do not forget to comment, and if you are satisfied, do not forget to share it with your friends. Thank you.